أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear fellow students and colleagues and the persons and the students of postgraduate who are appearing in MCPS RAP series examinations. I am Professor Sayyid Ali Haidar and I was taking the serial lectures on the hematology. Now we are actually doing what is called as, after the evaluation of the anemias and so on, and I think 7 or 8 lectures have been taken by me, and this is which a recent topic which I was going to discuss at the time was myeloproliferative disorders, which are divided into 5 clinically speaking. The first one was the acute myeloid leukemia, the chronic myeloid leukemia, the polycythemia vera rubra, the essential thrombocytosis, and the what is called as myelofibrosis. Now these type of the cases have been usually not commonly in our wards, but if they come, we have to manage it because these the diagnosis confirmed by the hematology department or by histopathology, and then they refer to us for the management purposes are concerned, for fitness for the chemotherapy or fitness for the radiotherapy. But the baseline knowledge should be, one should know about it. And this is the aim of my discussion actually. First of all, I already said that acute leukemias are usually seen, not all, in pediatric population, and a chronic type of leukemias are seen in the slightly older population, but not all. Predominantly, yes, of course you can say, but it is not the a rule actually. Today's discussion which I want to do is chronic myeloid leukemia. Actually, this is a problem which we are facing actually. We see these cases when the cases are referred for us for the transfusion purposes or for something else. So for the opportunist infections, etc. The chronic myeloid leukemia, it means that this disease actually is a chronic one. It is arising from the myeloid series, myeloid type of series, actually that is the progenitors of the WBC. It is called chronic myeloid leukemia. The epidemiology of the chronic myeloid leukemia is that can occur at any age, although, but in the mid-40s the incidence arises sharply, and the mean age is 45. You can say plus minus 5 median age. Incidence increases with the age. About 12 to 30% patients are more than 60 years old. So it is a geriatric population which are at risk. At presentation, actually 50% diagnosed by the routine lab tests, and 80% diagnosed during the chronic phase, because it has got 3 phases: the chronic phase, the blast phase, and the accelerated phase. The disease usually diagnosed during the chronic phase of the disease, where there are a lot of, the count is high, very high. I will discuss now afterwards. Now, this is actually the most probable etiology are the radiations, but it may be it is possibility of that it can be due to it may be due to the other environmental pollution and the industrial hazards. It is possible. For example, studies showed that atomic bomb survivors from Nagasaki and Hiroshima, after the latent period of about 2 to 11 years or 2 to 25 years, they develop this disease. Or those people who have got radiation for the ankylosing spondylitis, or those patients who have got radiation for the chest, or those patients who have got radiation for the neck, for the ENT problems, it is 3.6 years for the development of this. Actually,
genetic factors may be operative, because without genetic factor you cannot make the cycle of the metaplasia. So this is which I have already told you. Male are more affected 1.5 times more than female. And this is the study which was done about 10 years before. Now presentation, it is called chronic disease. It is insidious onset. It is a latent type of problem. It appears gradually actually, and the anorexia and the weight loss and the symptoms of anemia, the symptoms of anemia will be there. And there is splenomegaly, specifically speaking about the splenomegaly, it will be massive splenomegaly. And in about 10 to 20% patient may be asymptomatic. It is a incidental finding. When the patient arrived and to the OPD, and you have requested for the blood CBC, then you found this, that the leukocyte count, the patient is anemic and the leukocyte count is higher. What is called is normally it is 4 to 11,000. From 11,000 to 15,000 it is mild type of the leukocytosis. From 15,000 to 20,000 or 22,000 it's called moderate leukocytosis, and more than 30 to 35,000 it is called severe leukocytosis. More than 35 or 40,000, even 50,000 more than, it is called leukocyte reaction. But if it is more than that, this definition is depending upon the number. Although the number is mature cells, they are. It may be neutrophil dominant, it may be other cells which are dominant, monocytes, or so on. But the important thing in this case is that the numbers of the WBC is much more. 70,000, 80,000, more than 110,000. I've seen 350,000 WBC, many times more than 350,000. And the patient has got, and those patients have got splenomegaly, anemic patients, and there was a thrombocytopenia associated with them. Either they are present with anemia, severe anemia, or they are presenting with the, because of the cells which are actually this is a quantitative problem. The cells, they are not functionally active cells. So the intermittent infections are more, and because of the thrombocytopenia, there will be the petechial hemorrhages, and the hemorrhages occur at the different sites of the body. And these are how they present. Question is this. So this is the peripheral blood film, very showing, seeing the neutrophils, dominant, lot of neutrophils, in comparison with the RBC. You see the bunch of it. And look these WBCs. They have got, the nucleus is much bigger, and even the lobularity is gone. It is not segmented, or it is not lobulated. Now, how actually the pathogenesis? Because of the, I said already, mentioned you that is genetic factors, you have to plus some environmental factors, and then you go for the, what is called is the abnormalities which are present in the bone marrow, that will cause it. And so genetically speaking, the two chromosomes are important here. The chromosome 9 and chromosome 22. Now look, see, they occur in the pairs. This is 22, and this is chromosome 9. The first point is this, that in this case, at the chromosome 9, that is the ABL gene, and which is affected here. And this is what is called as a tyrosine kinase, which is affected
with this gene, and this will attack actually the chromosome. Here it is this one. This part is detached, you can say, of chromosome material, which is abnormal material, which is called ABL gene, which is detached, and on the other side, the chromosome 20, look to chromosome 22. It is called it is a part which is affected is BCR, breakpoint cluster region gene. It is BCR that is called, and these is a part which is expelled out, you can say, and form a chromosome which is abnormal chromosome. So ABL gene plus the chromosome 29, chromosome 9, and for BCR gene, the breakpoint cluster gene, region gene. If you add these two, it will form a translocation. This is called the translocation of the chromosomal material from one chromosome to the other chromosome. They form this is the abnormal chromosome which is formed. This is called BCR ABL gene or complex. Now this is the culprit where the problem starts, and it will stimulate the cycle of the production of the WBC quantitative in number, basically quantitatively very high. And you know that the leukotrienes are the responsible, and it is formed in the kidneys and in the liver for the formation of the most of the series of WBC. Now it is independent of it, of the leukotriene is concerned. So it is leukoprotein is not involving here. It is the stimulation of this complex, abnormal complex, which is called Philadelphia chromosome. Now this is the chromosome, and this is the ABL gene, and this is the BCR at 22. They formed what is called as the Philadelphia chromosome. Philadelphia chromosome is the combination of the ABL and BCR. And this question is called the fusion protein with tyrosine kinase activity. Fusion protein with tyrosine kinase activity. Remember this word, because this is the part which will be asked whenever the discussion will be open for the FCP's examination. In the long case, they will dug out what is the underlying pathogenesis. So you have to answer it properly, to remember it. I will repeat it again. This part of the chromosome 9 is ABL gene with tyrosine kinase, dependent upon the tyrosine kinase. And another gene which is called the breakpoint cluster region gene at the chromosome 22 is detached. Chromosome material are translocated, and at the chromosome 9 they form this chromosome and material, and this is called the Philadelphia chromosome. This is the complex of the BCR and ABL. So this is how the process starts. When the process starts, it means that it will start as such. There are three phases of the CML. First phase is called chronic phase. It means that the cell maturity definitely is there, and the median years are 4 to 6 years, and it's stabilized. The patient has got problems, but it's a stabilization of a very long period in 6 years. And then there will be advanced phases which are called accelerated phase, with a medium duration up to 1 year. The acceleration of this one for 1 year, and then for the next phase is the blast crisis, where the immature cells appearing now, and median survival is 3 to 6 months. And this is the last one. This is the terminal phase because it is now converting into
acute myeloid leukemia. It means that this phase means that the patient is going into the acute myeloid leukemia. So this is very important to understand. The chronic phase first, and then accelerated phase, then blastic phase. So for the early phase, there are, uh, definitely you have to see the what is called as the specific features associated to diagnose this phase or this phase or this phase. Now remember this, what is chronic phase? There are less than 10 blast cells from any series of the myeloid in the peripheral blood or the bone marrow. Accelerated phase 29 to 20, 10 to 29% blast cells in the peripheral blood film or in the bone marrow. Now here there is no role of platelet, but here in the platelet are less than 100,000, or it may be thrombocytosis reactive to more than what is called 1 million cells per cubic millimeter. Additional findings are cytogenetic evolution and progressive splenomegaly. Here the spleen are minimal. Here the spleen is larger to moderate splenomegaly. And the third phase, which is called blast crisis, now is converting into the acute type of myeloid leukemia, where more than 30% blast cells in the peripheral blood, although the phase is for 6 months. But here the end of the life, bone marrow and the blast cells are 30%. Large clusters of blast on the bone marrow biopsy and presence of the extramedullary infiltrates. You can diagnose with the help of the biopsy of the what is called the extramedullary reticuloendocrine system, like for example liver biopsy, like for example the lymph node biopsy. The additional findings in these blast crisis, fever and malaise and massive splenomegaly will be seen. So how we diagnose on the peripheral blood film or the bone marrow biopsy? Now this is you have to remember. If you can remember, it's good. Read it once, twice, or thrice. It was asked twice in the examination. As for me, myself is concerned, I answered it. Of course, I answered it, but they have asked it. इससे उनको अंदाज़ा होता है कि आदमी का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है. मतलब एक सीधी सी बात थी, आप CML को पढ़ते हैं, आपकी समझ में नहीं आता, फिर भूल जाते हैं. मैंने आपको इसकी नहीं है, इसको टुकड़े करके बता रहा हूँ. पहले क्या पढ़ना है इसमें, कि फिर उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए. ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम माफ़ नहीं किया जाएगा. कैसे बनता है ये माफ़ नहीं किया जाएगा. फेजेस क्या होते हैं ये माफ़ नहीं किए जाएंगे. अगर आप जितने भी काबिल हों तो लॉन्ग केस हो जाएगा ख़राब आपका. अगर ये आप नहीं बता पाएंगे, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई इसमें है या इसमें है या इसमें है. अब आप कह रहे हैं मैसिव स्प्लेनोमेगाली है, पेटिकल हेमरेजेस है, और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, और पेशेंट जो है ना बहुत टॉक्सिक लुकिंग है, ये ब्लास्ट क्राइसिस में जा रहा है पेशेंट, ये एंड ऑफ द लाइफ है. अगर यहाँ पे आप कर लेते कुछ तो शायद इसमें यह ना जाता. ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक माइल्ड ल्यूकेमिया बड़ी बहस हुई है. 1865 से ये पहली मरतबा पकड़ा गया था कि कोई कैंसर जो ब्लड है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज, आर्सेनिक इस्तेमाल की गई, रेडियोथेरेपी, बुसल्फान, हाइड्रोक्सीयूरिया, ऑटोग्राफ्टिंग, एलोजेनिक BMT. ये देखें आगे लिखा हुआ है ईयर्स, इंटरफेरॉन, एलोजेनिक BMT, फिर डोनर ल्यूकोसाइड. फिर इसने नोबेल प्राइज़ मिला इसको. इमिटेनेब फार्माकोलॉजिस्ट था, उसने बनाई थी ड्रग, और इसकी सेकंड जनरेशन भी है और थर्ड जनरेशन तक अभी मौजूद है. बहुत कॉस्टली मेडिसिन है. 1998 में इसको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है. कॉम्बिनेशन थेरेपी इमिटेनेब के साथ अगर आप देना चाहेंगे, इंटरफेरॉन, ये किसी को भी मिला सकते हैं. यानी आप एक्सीलरेटेड फेज जो है ना उससे पहले अगर आप कर लेते हैं, जैसी भी डिजीज़ आती है आपके सामने, और आप जो है ना उसको पकड़ लेते हैं, क्रोनिक फेज और एक्सीलरेटेड फेज के दरमियान अगर ये आप शुरू करते हैं, दैन डेफिनेटली दी आउटकम विल बी गुड. लेकिन अगर ब्लास्ट क्राइसिस में जाएगा पेशेंट तो फिर जो है ना 1000, यानी जो विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड की इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन विल अकर. और हेयर दिस केस क्योंकि इसके अंदर हमने एक्यूट
माइलॉइड ल्यूकीमिया का एलिमेंट शामिल हो जाएगा तो अब जो DIC के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिसमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोagulation, और इससे जो लोग बहुत खौफजदा होते हैं, एकदम DIC में अगर पेशेंट चला जाए आपका तो उसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सीमेन का ट्रीटमेंट ये है कि कीमोथेरेपी, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हाइड्रोक्सी यूरिया आप दे दें 3 ग्राम to 4 ग्राम पर डे, ये ड्रग अवेलेबल है। अगर आप फर्ज करें अफोर्डेबल नहीं है, कम से कम विस्कोसिटी तो कम करें ना, WBC का जो बर्डन है उसको कम करें। फिर आप जो है ना इंटरफेरॉन, जब तक कि आप आगे जाते हैं या आपके पास फैसिलिटी नहीं है, जब तक इंतज़ार करवाते हैं, तो अगर इससे रिस्पांस नहीं आ रहा तो इंटरफेरॉन तो आपके पास है ना। इंटरफेरॉन एक ज़माने में तो बड़ी मकबूल ड्रग रही है हेपेटाइटिस में, अब नहीं इस्तेमाल होती, लेकिन अल्फ़ा होते हैं, बीटा होते हैं, गामा होते हैं इंटरफेरॉन। अगर आप ये पूछना बैठ जाए कोई आदमी कि अल्फ़ा इंटरफेरॉन क्या होता है और बीटा इंटरफेरॉन क्या होता है और गामा इंटरफेरॉन क्या होते हैं, अगर देखें ना, जब यहाँ पे कोई आदमी बात कर रहा है तो जो एग्ज़ामिनर है वो इसके बारे में घुस जाएगा। अगर वो नॉलेजबल एग्ज़ामिनर है तो वो आपको अच्छी तरह से रगड़ेगा कि इसने फ़ायदा कैसे किया, सवाल ये पैदा होता है। तो ये आपको आना चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज। मैं इसमें अगर इसको डिस्कस करूँगा तो मुझे एक लेक्चर अलग देना होगा, लेकिन ये जो है ना ब्रिज है ये इंटरफेरॉन, जब तक कि आप इनमें से कोई चीज़ मुंतखब ना करें। ये कॉस्टली मेडिसिन है, इमिटेटिव मॉलिक्यूलर थेरेपी कहते हैं। असल बात जो थी, जो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर आप कर लेते हैं, DMT को कर लेते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन को कर लेते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यानी इसका दौरा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्टली प्रोसीजर 40 से 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं इस पर। अगर कोई अफोर्डेबल है, नहीं है, अगर अफोर्डेबल है तो वो सोशल वेलफेयर हेल्प करेगा। हम सॉरी के जो कैंसर हॉस्पिटल्स के हैं इस मुल्क के, वो यहाँ तक तो कर देते हैं आपको। इसके ऊपर की थेरेपी जो होती है ये वाली, ये कॉस्टली थेरेपी है, तो वो अवॉइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं। और उस दौरान क्या होता है कि क्रॉनिक फेज से वो एक्सीलरेटेड फेज में आ जाता है, और जब एक्सीलरेटेड फेज में आता है तो किसी वक्त भी अगर ब्लास्ट फेज में आ जाए वो क्राइसिस में, तो पेशेंट की भी डेथ हो जाएगी इसमें। तो इस आपस में एक दूसरे को डाल देना, फिर ईमानदारी के साथ अगर कोई काम करेगा, आप मालूम है इस मुल्क में, तो वो फिर फाइनेंशियली तौर पे अच्छा नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जो प्रोफेशन है हमारा उसको अपनाते ही नहीं है, कहते हैं इसमें आमदनी ही कोई नहीं। अगर आमदनी है तो उन लोगों की है जो कि ईमानदारी से काम नहीं करते, वो जस्टिफेबल नहीं होते इन्वेस्टिगेशन के मामले में, और जस्टिफाइड नहीं करते अपने आप को मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉब्लम आ रहा है सारा इकोनॉमिक्स का। आपकी कंट्री ने आपको ओन ही नहीं किया। जो आदमी बीमार है वो बीमार है, मरता है तो मरने दो। मैं आपको एक किस्सा मैं सुना देता हूँ इस पर। हमारे कहा कि मैं एक किस्सा सुना देता हूँ। देखो वो एक ख़राब कौम है, ठीक है ना, अच्छी कौम नहीं है, लड़ने बनने वाली और दूसरों का हक जताने वाली, फलां फलूँ, उनमें लाखों खराबियाँ हैं। लेकिन इंसान को इंसान समझते हैं। कोई अमेरिकन नेशनलिटी रखता है तो वो उनके लिए ह्यूमन है, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, जू हो, क्रिश्चियन हो। अब उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली होती है। तो वहाँ पे किसी को जो हो गया, सेकेंडरी डेवलप हो गई लंग में। जब लंग में डेवलप हो गई तो ज़ाहिर बात है अब आप क्या करेंगे, मुझे पता है ना आपको। आप सपोर्टिव थेरेपी देखें, नहीं, उन्होंने क्या किया कि थोरेसिक सर्जन ने पार्ट जिसमें सेकेंडरी डेवलप हुई थी उसे काट के फेंक दिया। फिर 6 महीने में बाद दोबारा जब उसको फॉलोअप के लिए किया गया तो दूसरी जगह फिर लंग के अंदर जो है वो उन्हें इन्फिल्ट्रेशन मिल गए। उन्होंने सेकेंड सर्जरी परफॉर्म की और पेशेंट को दोबारा 1 महीने के अंदर अंदर फिट कर दिया, काम करने के काबिल हो गया। वो उम्र उसकी जो थी वो 70 साल से ज़्यादा थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि 6 महीने या साल के अंदर जो था, फिर उसको कोई हेमोप्टाइसिस हुआ। तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें मालूम चला कि किसी जोन के अंदर, सेगमेंट के अंदर जो है इन्फिल्ट्रेशन आ रहा है। उन्होंने फिर थर्ड सर्जरी परफॉर्म की, रेडिएशन वगैरह तो कर चुके थे वो। अब इसके बाद उन्होंने सर्जरी परफॉर्म करके इसको कीमोथेरेपी के साथ कनेक्ट किया
और रेडियोथेरेपी की। यही बंदा जिसकी 3 मरतबा सर्जरी हो चुकी थी, उस बंदे को उन्होंने 74 साल की उम्र तक पहुँचा। 70 साल की उम्र में शुरू हुआ था और 74-75 की उम्र तक पहुँच गया वो। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ही डाइड एट द एज ऑफ 82, यानी वो 12 साल जिंदा रहा इसके बाद। तो इंसान को वो इंसान समझते हैं, ऐसे नहीं है वो छोड़ देते हैं, मरने के लिए नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ तो ये है कि वो बजट का नहीं होता, बजट होता है तो बजट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, लोगों को फिर फायदा नहीं पहुँचता। तो इसलिए आपको ये बताने का मकसद ये था कि थेरेपी मौजूद है। अब FCPS का एग्जामिनेशन दे रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि कॉस्ट इफेक्टिव क्या चीज़ है, पूछते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या है। हाइड्रोक्सीयूरिया है, इंतज़ार करें इसका अरेंजमेंट का। अगर इससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो ब्रिज ट्रीटमेंट कराता है, ये इंटरफेरॉन बेस्ड ट्रीटमेंट आप रखें जब तक कि इनमें से कोई चीज़ अवेलेबल ना हो जाए। ठीक है ना, सर्वाइवल पोस्ट BMT का ये है। ये देखेंगे यहाँ पे ईयर्स हैं और यहाँ पे जो है ना प्रोबेबिलिटी है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब ये जो है ना कंप्लीट रिमिशन हुआ है इनको, CR जिसे कहते हैं, जिनको BMT के बाद की बात हो रही है। तो 6 साल तक का सर्वाइवल हो गया उनका, तकरीबन 6 साल अच्छा खासे लोगों का सर्वाइवल हो गया। तो मतलब कहने का ये था कि ये जो है ना ये फ़ायदेमंद है। यस, 70% लॉन्ग टर्म क्योर रेट है। डोनर अवेलेबिलिटी, HLA कंपेटेबिलिटी पर डिपेंड करता है, एज ऑफ द पेशेंट पे डिपेंड करता है, लेंथ स्टेज ऑफ द डिजीज़ पे डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट रिलेटेड मोर्टेलिटी पे डिपेंड करता है। और ज़्यादा जब आप ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ अगर इसको होती नहीं है तो फिर ये आदमी का सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा। इनफर्टिलिटी इसमें इसलिए है कि इसके अंदर जो ड्रग इस्तेमाल आप कर रहे हैं या कीमोथेरेपी इसके साथ दी जाती है, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। ये इसके प्रॉब्लम है, लेकिन असल में बचाना मकसूद था। लॉन्ग टर्म क्योर रेट 70% है, अब आप अंदाज़ा लगाइएगा। और फिर क्या है, द आइडियल टारगेट द मॉलिक्यूलर थेरेपी। अब उसके बाद उनके ये नहीं करवाना चाहते थे तो इमिटिनिब, जो कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, वो बड़ा यूनिक सब्सटेंस है। स्पेसिफिक डिजीज ऑफ द डिटरमाइंड टू बी द कॉजेटिव एबनॉर्मलिटी, वहाँ पर अटैक कर रहे हैं आप, यानी एक तरह की ये जीन थेरेपी हो गई है। हैज़ यूनिक एक्टिविटी है कि रिक्वायर्ड फॉर द डिजीज इंडक्शन। वहाँ पे वो काट देगा, उसको बनने नहीं देगा, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को बनने नहीं देगा। जब वो बनने नहीं देगा तो फिर वो ज़ाहिर बात है सेल्स की जो आपने हाइपरप्लेजिया हो रहा था वो रोक देगा, डिस्पेंसेबल फॉर नॉर्मल सेलुलर फंक्शन की तरफ ले आएगा। लॉन्ग टर्म थेरेपी है ये। और मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया था, टायरोसिन फॉस्फेट इनहिबिटर है ये। और ये फर्स्ट जनरेशन अभी है इसका, सेकेंड जनरेशन भी है, थर्ड जनरेशन भी है। तो इस तरीके से जब वो इसे ब्लॉक कर देगा तो ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं बनेगा। ये कहते हैं कि इमिटिनिब कंपेयर विद इंटरफेरॉन लो डोज सैटारिबिन। अब इन्होंने कंबाइन किया इमिटिनिब को कॉम्बिनेशन थेरेपी में, इंटरफेरॉन के साथ और सैटारिबिन के साथ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है फॉर न्यूली डायग्नोज क्रॉनिक फेज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में। ये बेस्ट थेरेपी है जो उन्होंने 2003 में शाई की। सर्वाइवल रेट इसमें तकरीबन 10 ईयर से भी ज़्यादा है। ट्रीटमेंट गोल्स में इनमें देख लीजिए आप, इमिटिनिब में BMT है ये सारा, कि ये जो है ना कंप्लीट रिकवरी और PCR नेगेटिव हो गया उनका, ये सारा लिखा हुआ है। BMT में तो बहुत बड़ा अच्छा स्कोप है, इमिटिनिब में थोड़ा कम है इससे, खाली इंटरफेरॉन देंगे तो कम है। और हाइड्रोक्सीयूरिया में जो है वो रेट इसका और भी कम है। इसके मुकाबले में अगर कॉम्बिनेशन आप थेरेपी दे दें, इमिटिनिब को आप इंटरफेरॉन के साथ कंबाइन करते हैं या इमिटिनिब को हाइड्रोक्सीयूरिया के साथ कंबाइन करते हैं या इमिटिनिब को सैटारिबिन अरेबिनोसाइड के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इमिटिनिब का मतलब ये कि वेरी फ्यू मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सेस
इसमें जो है वो 5 to 10% है। इनमें रेजिस्टेंस कुछ पेशेंट में ये फ़ायदा नहीं होता इमिटिनिब का, जब नहीं होता तो बीएमटी उनके लिए ऑप्शन रह जाता है, या लैक ऑफ रिस्पांस होता है। इनमें एक्सपेंसिव थेरेपी है। एक दवाई जो है वो, एक टैबलेट जो थी एक ज़माने में 5,000 6,000 रुपये की थी। अब उन्होंने क्या किया कि इसको जो है ना वो कुछ कंपनीज ने कम रेट पे बनाया, लेकिन फिर भी 700 रुपये पर डे समझ लें आप, तो 21,000 रुपये हो गए। 21,000 से लेके 30,000 रुपये कम से कम, और ये खानी भी होती है सालों। तो उसके बाद यही होता है कि हमारे पास तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर। तो सोशल वेलफेयर की तंजीमें जो होती हैं वो हेल्प करती हैं, या हमारे जो अहबाब हैं वो हेल्प करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ज़कात है, सदक़ात है, खैरात है, उनको जो है ना इस्तेमाल कर लेना चाहिए मरीज़ को बचाने के लिए। टॉक्सिसिटी जो है लॉन्ग टर्म होगी, और जितना दिन आप इस्तेमाल डिपेंड करता है ड्यूरेशन कितना है इसका, उस वक्त डेवलप पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतनी टॉक्सिक ड्रग नहीं है, ये इतनी टॉक्सिक ड्रग नहीं है। सीमेंट की वजह डायग्नोस किया आपने, अब देखें आप ये इसका जो है ना समरी क्या है। यंग है विद अ वेल मैच डोनर है, तो आप चले जाएँ। पेशेंट की उम्र 45 है, 50 के तौर पे एलोग्राफ लगा के, और ये एलो जो है ना वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। यंग पेशेंट स्टार्ट, अब ये जो है ना उन लोगों के लिए है जिनकी एज अब ज़्यादा है, डायग्नोसिस बनाई है आपने और उनकी उम्र ज़्यादा। पहले तो आप क्या करें, इमिटिनिब को ट्राई करें 400 मिलीग्राम पर डे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो कंटिन्यू इनडेफिनेटली का मतलब ये होता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। पुअर रिस्पॉन्स आया तो फिर आप मजबूरन इसको क्या करेंगे, आप कॉम्बिनेशन देख के देखिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन देखें। या फिर आपके पास उससे भी फ़ायदा नहीं होता तो फिर आप बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, या तो ऑटोलॉगस या एलोजेनिक। ये जो है ना इस तरीके से मैनेज हो जाएगी डिजीज़। देखिए ना, ये पार्ट जो मैंने बताया है क्रॉनिक माइलोइड की, मैं को ये मैंने टुकड़े कर 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 बताया है, थोड़ा 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 करके। ये एकदम आप जमा करेंगे चीज़ें तो फिर वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला गया, क्या पूछा जाएगा। ठीक है ना, हमारे कुछ भी क्या ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने ये काम किया है कि जब वो डिस्कशन करा उन्होंने क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया पे, तो एग्जामिनर पर भारी पड़ गए वो। एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना जानते होंगे। उन्होंने जो बताया शुरू किया है तो इतना अच्छा बताया कि वो मतलब बिल्कुल उन्हें आउटक्लास कर दिया था, और वो नॉलेज देख के हैरान हो गए थे कि उस बंदे ने जिसने भी बताया था वो इस तरतीब में बताया उसको कि वो खुद ब खुद, यानी जो एग्जामिनर थे वो हैरान हो गए, क्योंकि उसकी फाइंडिंग सही थी, उसकी डिफरेंशियल सही थी, फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सही था। तो वहाँ से उसने पूछना शुरू किया जब, तो वो जवाब देता रहा देता रहा देता रहा देता रहा देता रहा, जब तक कि टाइम पूरा नहीं हुआ वो बोलते ही रहा वो कैंडिडेट, तो वो रुका ही नहीं बीच में। तरकीब ये होती है कि आप रुके नहीं, आप बोलते रहें बस। तो 10 में से 7 अगर आपको मिल जाते हैं लॉन्ग केस में, या तो कोई MRCP दे रहा है आयरलैंड में, या वही पाकिस्तान में कोई दे रहा है एग्जामिनेशन, और वो बोलना छोड़े ना, रुकना इसमें जो है ना समझने का क़यामत ढा देगा। इतनी आप बोलते रहें, यानी आप डोमिनेंट होने की कोशिश करें ना एग्जामिनर के ऊपर। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि वो जज कर लेता है कि इसको कितना आता है डिजीज़ के बारे में। उम्मीद है कि ये आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अब हम इसके बाद 2 पार्ट हमने किए हैं, हम 3rd पार्ट को इंशाल्लाह लेंगे, और पॉलीसाइथेमिया वगैरह को हम डिस्कस करेंगे दोबारा, यानी अगले सेशन में इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।